Hello and welcome everyone. So we have all been there, something annoying or frustrating happens and as a result we spend the rest of the day in foul mood. And the additionally frustrating thing is someone can often know they are in a bad mood but be unable to snap out of it. However, you and others around you do not have to put up with those foul moods, instead you can do something about them. Let's start the session and let's know how you will change your bad mood and how will you make the people happy around you. So before actually giving you some tips for that, let me tell you why mood is actually important. मूड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, वाई वी नीड टू स्टे हैप्पी. सो मूड प्लेज अ मेजर रोल इन एवरी वंस लाइफ. इट इज़ अ थिंग दैट विल डिटरमाइन योर डे. सो बेसिकली मूड्स आर मीडियम टर्म इमोशनल स्टेट्स. सिर्फ एक आपकी इमोशनल स्टेट ही होती हैं एंड दे आर इवन शॉर्टर देन अ पर्सनस लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट एंड लॉन्गर देन एन इम्पल्सिव रिस्पॉन्स टू एन इंडिविजुअल इवेंट. सिर्फ आपका इमोशनल स्टेट होता है दैट हाउ यू आर फीलिंग ऑन दैट स्पॉट, राइट. मूड्स आर जनरली नेगेटिव और पॉजिटिव. सी अभी मूड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इफ़ यू विल हैव नेगेटिव मूड देन यू विल बी डिप्रेस्ड, एंगर एंड विल ऑल्सो फियर फ्रॉम सम थिंग्स. एंड फियर इज इफ़ यू आर हैविंग अ गुड मूड तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे. द पीपल नियर यू विल ऑल्सो फील गुड with your company, right? So this is how mood affects you in your daily life. Here are some ways to change your bad mood. First one is talk about what has put you in a mood. Means what is the actual reason of your bad mood. So simply at that point if you are in a bad mood then there's obviously a reason for it. उस reason को ढूंढो और आपका क्यों mood खराब हुआ. Then talk to a friend about it. आप किसी से भी बात करो. Simply talking about your problem with someone will make you feel many times better. But if you cannot talk with any of your friend, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, then simply step outside and letting out a mighty scream or having a good cry. आप अपने आप को रो के भी हल्का कर सकते हो. Remember that bottling it all up will only darken your mood. So उसको bottle up नहीं करना है. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू बीट अ बैड मूड विद एक्सरसाइज. आप डेफिनेटली एक्सरसाइज करके अपना मूड ठीक कर सकते हो. एक्चुअली एक्सरसाइज इज़ अ ग्रेट वे टू गेट यू आउट ऑफ अ बैड मूड. इफ़ यू कैन मेक योर सेल्फ टू डू सम एक्सरसाइज you will reap the benefits. The point and the fact behind that is exercise releases endorphins, which are some chemicals in your brain that make you feel good. So by doing some exercise, you will automatically make yourself feel better. See, there are ample of things we are doing on daily basis in our lives and we do not know the exact reason behind that. So most of the things which are related to our body is actually scientific, right? So let's move to the next thing and that is to eat chocolate to make you feel better. So are you the one who always have a chocolate when you are in a bad mood? Do it helps you out? Yes, actually yes, it will help you out. And isn't it amazing how many people instantly reach for their favorite chocolate for comfort if they are feeling low? It's probably not a bad thing to do, though, as chocolate is known to be responsible for positive mood lifting effects. Surprised, right? Yes. And it happens really due to the release of serotonin, the brain's natural pick me up. एक ऐसा हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल है और whatever we can say that helps us to regenerate your mood, right? And this is the one that will help you out whenever you are in a bad mood. Next point is blasting out some positive music. Yes, music is simply a stress buster actually, and everyone has some favorite tunes to listen to, from rousing classical music compositions to bouncing pop tunes. अगर आप अपना कोई भी एक फेवरेट ट्रैक सुनते हो दैट मेक्स यू हैप्पी या आपकी कोई भी जो हैप्पी मेमोरीज इन लाइफ की उसको याद दिलाता है, गो फॉर इट. As this is what that can draw you out of your bad mood. And why not go one step further? Why not? आप गाना सुन रहे हो तो आप साथ में गा भी सकते हो. So the song you like the most,
Play it on high volume and start singing with it and see how instantly you will get rejuvenated. Time to move to the next thing, and the next thing you can do to get out from bad mood is to take time out. Time किसके लिए निकालना है? Time आपको खुद के लिए निकालना है. So simply give yourself a chance to blank out all your negative thoughts by taking a few moments out and doing something different. For example, take half an hour out to have a soak in the tub. It will definitely soothe your body and your mind too, and it is very, very effective. And also in other ways, I can say just pamper yourself as much as you can by doing various things. You can visit a salon, you can go for shopping, you can go for any dinner night or something else. So take some time out for yourself first, because if you will be happy, you will not be stressed, and if you will not be stressed, you will not be in bad mood. And when you are in a bad mood, it's sometimes good not to be around other people until you have got it out of your system. So आप अकेले थोड़ा time spend कर सकते हो if you think it is good for you. The next thing you can do is to avoid people who put you in a bad mood. Yes, I know it might seem obvious, but there are people who just have an ability to put you in a bad mood. Okay, so some situations cannot be avoided here. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉस है या आपका कोई भी वर्क कलीग है, आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. बट येस, यू कैन इग्नोर द पीपल जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, जिनकी वजह से आपका मूड ख़राब हो रहा है. Some people can actually drain you and leave you in a bad mood. So it's best कि आप उनको avoid करो और आप उनसे contact कम ही रखो if you know that they are the one who are putting you in bad mood. Try to follow this thing, and I can assure you, you will be happy. Let's move to the next point, and the next point is make contact with positive people. अगर आप जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो गए हैं, इट मीन्स आप अच्छे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ. एंड डेफिनेटली इट्स द फ्लिप साइड ऑफ अवॉइडिंग नेगेटिव पीपल, बिकॉज देयर आर सम पीपल आउट देयर हु डू हैव सम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन यू, राइट. और उनके साथ आपकी कभी लड़ाई नहीं होती और हमेशा आपको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. इट मे बी दैट यू हैव लॉस्ट टच विद देम रिसेंटली, शायद आपका कोई टच ही ना हो आपस में, आप लोग अलग हो गए हो, right? But go ahead and do not wait for them to make the first move. Do it yourself, because आपको अपने आप को surround करना है with some positive people, right? To help you get out of your bad mood. This is so because our company affects us a lot. हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका नेचर हमें बहुत अफेक्ट करता है. अगर हम हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे then we will not be positive at all. The next thing you can do is to get a pet. And yes, studies have found that pets can actually help us feel better. And yes, for starters, animals do some pretty funny things at times which will help you to make laugh. And if you are simply stroking a pet, it is known to lower your heart rate. और इससे आप बहुत शांत हो जाओगे. And if you get yourself a dog that requires plenty of walks, that will mean you get some exercise in daylight. आप अपने डॉग के साथ कितनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो. यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन प्ले विद इट, एनीथिंग. इट्स अ ग्रेट कंपेनियन एक्चुअली. द नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल गिव यू इज़ टू थिंक हैप्पी थाट्स. और ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, आइदर इट्स पॉजिटिव or negative. So if you can take yourself back to a time when you were happy, then this will instantly fill you with happy thoughts. You should remember your positive good memories, sweet memories. Definitely आप एक photograph देख सकते हो. Just get your album, right? Album लो, see, go through the photographs and you will definitely regenerate your mood. See, it actually really comes down to choice. Choose to think of unhappy thoughts and you will be unhappy, and vice versa. And also people are only as happy as they allow themselves to be. अगर आप चाहते हो तो ही खुश हो सकते हो. Otherwise do anything. You can adapt any technique in your life, but you cannot be happy if you do not want it yourself. Last but not the least is try to avoid worrying. Worry is one of the major causes of unhappiness. और सिंपल सी बात है, वरिंग डज नॉट मेन द मैटर्स. चिंता करने से क्या होगा.
और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अभी उसी टाइम डील कर सकते हो, आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, देन गो फॉर इट, देन ओनली थिंक अबाउट इट एंड डू द एक्शन। बट जिस चीज़ के बारे में आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, द एक्टिविटी यू हैव ऑलरेडी डन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सो देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ डूइंग सो। So adapt all these things in your mind and you will surely get out of your bad moods. Thank you for watching. See you next time.